Chapter 11, area related to circles. This is Rupa, Guha, and we are doing the concept of this chapter. This chapter is contributing almost 4, 5, and you may even take 6 marks also in some of the papers. I have seen 6 marks also. So let's get started with a few things, important things about this chapter. First of all, whenever we are dealing with this particular chapter, we should know the concept of sector. Now, what is sector? So, the part of the circle, circular region enclosed by two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle. This particular part I am emphasizing on because MCQ में इसका ये आता है. See, what is the what do you name this part, right? So you should be knowing between two radii and corresponding arc, this particular region is called the sector of the circle. Now, sector of the circle further is divided into minor sector and major sector. As you see, I have already labeled it. So the smaller, obviously smaller one will be called the minor sector OAPB, and the major one, that is OAQB, will be called the major sector. Now the next thing is area of a sector. So when I come to the area of a sector, definitely we'll be going for major and the minor sector. So what plays an important role here is the angle theta. That plays an important role here. So angle theta, let us take the angle to be theta, and the area of the minor sector, or sometimes even if you say sector also, by that also I mean minor sector, it is theta by 360 into pi r square. Now, if I go with major sector, what I need to change is that what is the angle the major sector is subtending at the center, right? So this will be 360 minus theta divided by 360. So theta की वैल्यू यहाँ पे आप mark this point, यहाँ पे हमने change कर दिया. टोटल एंगल इज 360. सो 360 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो मेजर सेक्टर का एंगल बन गया. सो 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 into pi r square. So that will be the area of the major sector. Now I have picked an example which is totally based on this concept. So area of a circle has the sector of a circle has an area of 40 pi square unit, and the central angle theta is 72 degrees, and the radius of the circle we need to find it out. This is a 1 marker question from 2025. So whenever you are attempting any question from surface area or from area related to circle, always make sure what is given in the question, jot down. Even in AP, what is given in the question, we have to jot down. So that is what I have jotted down. Theta is 72 degrees, area of sector is 40 pi. Now I need to simply put the values and find the radius. So now only the calculation part is left here. We know that area of a sector is theta by 360 into pi r square. I have put the respective values and I landed with r square equals to 200 and r will be 10 root 2 centimeters. So this the correct answer is option D. Okay, students. So let's move on to the next particular topic, that is length of a sector. Length of a sector, what do you mean by that? Length of a sector is the part APB, right? The length of means from the circumference of the sector, I am picking and choosing a particular part of the sector. So length of a sector is given by theta by 360 into 2 pi r, because circumference of a circle is 2 pi r. So part of a circumference. So theta by 360 into 2 pi r. So let's take an example which is based on the length of the sector. So area of a sector is given to us, that is 54 pi, radius is 36 centimeter. We need to find the length of the corresponding arc of the sector. This is a 1 marker question from 2025. As I told you, just jot down what is given. So I have done that. R equals to 36, area of sector is 54 by pi. Now in these type of questions, I'll be sharing a very good trick in which the question will be solved in a jiffy. So इसमें क्या करना है, मुझे basically theta निकालना है, right? क्योंकि थीटा की वैल्यू पता है तो लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क निकल जाएगा.
but why to waste your time? Because just memorize, क्या याद ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. सो मैं इतना कैलकुलेशन करूं क्यों? थीटा बाई 360 निकाल लेती हूँ और आई सिंपली पुट दैट वैल्यू इन द लेंथ ऑफ द आर्क. ठीक है. सो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू, रेस्पेक्टिव वैल्यूज. एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 54 पाई एंड रेडियस इज 36. डाल दिया वैल्यूज. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थीटा बाई 360 की वैल्यू निकाली, फर्दर कैलकुलेशंस नहीं किया. एंड लेंथ ऑफ द आर्क हमें पता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है. तो थीटा बाई 360 की जगह 1/24 डाल दिया. एंड सिंस द आंसर वॉज इन टर्म्स ऑफ पाई, सो आई डिडंट टुक द एफर्ट ऑफ putting the value of pi. So cancelling, I simply got 3 pi centimeter. Okay students, so ये वाला trick आप use करके fast calculations कर सकते हो and you can save your time. Okay, so moving on to, this was correct answer was option D. Now moving on to the next topic, that is सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट. नाउ व्हाट इज सेगमेंट ये देखेंगे, क्योंकि अगेन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू. सेगमेंट होता क्या है? एवरी वन ऑफ अस नो, बट वेन प्रेजेंटेशन, जब हम प्रेजेंट करते हैं तो कई बार हम चीजें भूल जाते हैं, राइट? सो द एरिया of a circular region between a chord and the corresponding arc is called the segment of a circle. I have drawn the figure, just have a look. Again, as we went with sector, यहाँ पे भी segment में भी same चीज है. माइनर वाले को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे एंड मेजर को मेजर सेगमेंट बोलेंगे. सो एरिया बिटवीन the chord and the corresponding arc is called the segment. Now let us get the area of the segment as well. So again, area of minor segment या segment भी बोल सकते हैं. इसमें करना क्या है? सेगमेंट में एरिया ऑफ द सेक्टर के साथ स्टूडेंट्स क्या करना है, आप सेक्टर में से यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. एक सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, उसमें से आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. कैसे निकालेंगे? यदि वो निकल गया और सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो सेगमेंट निकल जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. नाउ इफ थीटा इज 60 डिग्री, देन एरिया मीन्स ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, राइट? और क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ह्यूरॉन्स फार्मूला से हमने निकाला था एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाई √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या है? r है. सो आई गेट द आंसर एज √3/4 इंटू r स्क्वायर. नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्री, इट बिकम्स अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, एंड इन दिस केस बेस एंड हाइट बोथ आर रेडियस, सो हाफ r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. सो इस तरह से आप दोनों केसेस में जो भी दे रखा है, यूजुअली 60-90 ही आता है, सो वी कैन फाइंड इट आउट, आराम से हमारा निकल जाएगा. ओके फाइन. सो दैट इज हाउ आई गॉट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी. एंड इफ थीटा की वैल्यू कुछ और आती है, देन a formula is also there, half r square sin theta by 2 cos theta by 2. Since it is not mentioned in the book, I have not mentioned here as well, but you can use that formula as well. So moving on to the next part, that is area of major segment. Major segment निकालना है, so क्या करेंगे? pi r square, make read this segment, right? So पूरे सर्कल में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर देना? एरिया ऑफ minor sector subtract kar dena. I'll get the area of major segment, not sector. So rectification here. Moving on to one example which takes care of this particular formula. So a chord of a circle of radius 10 cm subtends an angle, right angle at the center. We need to find the area of the corresponding minor segment, and theta, pi की value है 3.14. This is a 3 marker from 2025. So as I told you, let's write all the things which is given in the question. So r is 10 centimeter, theta is 90 degree. Now area of minor segment will be area of sector minus area of triangle.
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हम एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सो हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा. सबकी वैल्यूज डाल दी. पाई की वैल्यू 22/7 नहीं डालनी है, 3.14. मेक श्योर दैट वॉट एवर रिटन इन द क्वेश्चन यू यूज दैट वैल्यू ओनली. ओके, सारी वैल्यूज डाल दी. सो आफ्टर simplification I got 78.5 minus 50, and further I got 28.5 centimeter square. So this is the area of minor segment. So students, we have nailed this question as well. Now let us take one more example which explores this concept. So an arc of a circle of radius 21 centimeter, subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc as well as the area of the minor segment. So this is a 5-marker question, last to last year 2024. So चीज़ें क्या दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं. आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर और थीटा इज 360 डिग्री. तो पहली चीज जो मुझे निकालनी है दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क. इट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. आई एम गोइंग टू पुट ऑल दी वैल्यूज. पाई की वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, एंड सिंस 21/7 के टेबल में आता है सो वाइज थिंग टू डू क्या किया, पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी, कैलकुलेशन किया, सब कट कुट के I got the answer as 22 centimeter. Now I land with the second part of this question. Area of minor segment equals to area of sector minus area of triangle. Since the angle is 60 degrees, so it is a right angle triangle. So area of sector is theta by 360 into pi r square, and area of triangle being a right angle triangle will be root 3/4 into r square. Now in this रूट 3 की वैल्यू नहीं मेंशन करी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू लीव द आंसर एट दिस स्टेज. एरिया ऑफ अ सेक्टर 231 आया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 441 रूट 3/4. सो आई लेफ्ट द आंसर एज इट इज. यदि क्वेश्चन में वैल्यूज दी है तो आई नीड टू सॉल्व इट फर्दर, बट नहीं दिया है तो हम इसको इसी स्टेज पे छोड़ देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया. सो विद दैट आई फिनिश दिस वीडियो. आई हैव डन ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो आई विल गेट बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.